Good evening, everyone. Am I audible and visible to all? Am I audible and visible to everyone? Yes. Hi. All right. So we are going to do a lot of bills and acts and rules. Good evening to everyone, which have been there in news. And this again will be done in two sessions. Today we will set up. CLAT Possible says yes, yes. Is the CLAT paper made? हाँ, मैंने ही बनाया, मैंने बना दिया. पर मैं बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या रखा. Yeah. So let's start off with the very first one. This is your Criminal Procedure Identification Act of 2022. So let's begin with the very first act for the day. Now, we also have the act and we have the rules, so we are going to deal with both of them. So the very first thing is this particular act, it has already been converted into an act. It replaces the Identification of Prisoners Act of 1920. So obviously, as a law-abiding country and where rule of law prevails, we need to know who are the criminals, right? We need to have a database of all of those criminals. We need to make sure that they don't repeat their offenses. And a database is basically kept so that, our investigation teams, they can work in a better fashion. Now, of course, there have been a lot of controversies with respect to this particular act in the sense that, some say that the right of privacy, which is an integral part of Article 21, as per Justice Puttaswamy versus Union of India, this is there. But however, you see, then there are a lot of other people who also say Article 20, Clause 3, which talks about right against self-incrimination, where I cannot be forced to be a witness against myself. Keeping all of that in mind, let's talk about what this particular act has, and then we will deal with the rules. So the data permitted to be collected. Now, according to the 1920 Act, the data that we could collect was fingerprints, footprint, impressions, and photographs. The 2022 Act adds on to this and says we can also take biological samples, behavioral attributes like signatures and handwritings, and we can also take the blood, the semen samples, hair samples, swabs, and also do a DNA profiling. So the next one is, of course, you can see how the scope has been enlarged. The persons whose data may be collected. Now, 1920, it says anyone who's been convicted or arrested for an offense with rigorous imprisonment of 1 year or more, persons ordered to give security for good behavior or maintaining peace. So, for example, if somebody has been charged with an offense of drug peddling, and after which you cannot find a lot of evidences, and this person is out on bail, and somebody has paid some security for their good behavior. So we are talking about such people here, right? The next one is magistrate may order in other cases also from any other arrested person to aid criminal investigation. The operative word over here is even if we are taking samples from any other person to aid the investigation, that certain somebody should have been arrested. Now, in 2022 Act, we say biological samples can also be taken. However, they may be forcibly taken only from people who've been arrested for offenses against a woman or offenses against a child. Or if the offense carries a minimum punishment of 7 years imprisonment, wherein a lot of people also say that offenses against a woman can entail many offenses. कि अगर सारे के सारे ऐसे offenses के ऊपर अगर हम लोग biological samples लेने शुरू कर दिए, we are not talking about the heinous crimes, we are talking about other offenses also. So some people have an issue with that. The next one is your preventive detention law. Article 22 talks about both punitive detention as well as preventive detention. We are all aware that preventive detention takes place where there is a threat to national security. And the last one is something that people have a huge issue with, wherein they say that it can be done on the order of the magistrate from any person and not just an arrested person to aid investigation. So earlier on, this was only with
respect to arrested people whenever we had to take samples to aid an investigation. But now, in order for us to aid an investigation, we can also take samples from people who've not been arrested. Then is persons who may require or direct the collection of the data. Earlier on, this used to be just with, the people who used to direct the collection of the data or who would collect the data, who would sign on that particular document would be the investigating officer, the officer in charge of the police station, or of a rank of sub-inspector or above. And now we've given this authority to also the head constable. And in addition to that, the head warden of a prison, the metropolitan magistrate, judicial magistrate of first class. And if a person is required to, we've just taken the example of that, if there is a person who is required to maintain good behavior or peace, even an executive magistrate can do this, who can direct the collection of such a data. Now, the NCRB, or the National Crime Record Bureau, will be the central agency to maintain the records as per the Act, and it will share this data with the law enforcement agency so as to aid with the investigations. And such an account or such a data can be kept in a digital or an electronic form for 75 years. Again, something that people have an issue with respect to प्लीज सर सितंबर पार्ट 2 सेंड, अच्छा सेंड लिखना था, ठीक है. सो 75 इयर्स के लिए हम लोग ये वाला डेटा बैंक रख सकते हैं, और ये records will be destroyed only if a person who has been acquitted after all the appeals or released from trial. However, even in such cases, once the magistrate gives the reason in written form, such samples can also be kept, even if a person has been acquitted. Now, for some people, they say, 75 years is almost the life expectancy. So that means you're going to keep our samples for such a long time, which some people have a problem with. Now, you have to understand this with respect to the right to be forgotten. So you must have read about this in the papers. However, the data protection bills have not really been made. The draft has already come up. That's a different deal altogether. But in the last year, Supreme Court said that the right to be forgotten is also a part of your Article 21. So this is, of course, in our country, we don't have freedom, we have liberty. So right to be forgotten in the sense, some terrorists cannot say that, extremists cannot say that. But however, sometimes when there are certain videos of us on social media or on online platforms, and we are doing some goof ups, or we made a mistake, we've gone to jail for it, we paid the penalty for it. So, such people are like, we have a right to be forgotten, just forget about us. But you see, like I started off this entire discussion with this thing, that we don't have freedom, we have liberty in our country. And so hence a right to be forgotten also has certain reasonable restrictions attached to it. मतलब कौन इंसान ये बोल सकता है कि please kindly forget about me, or remove my samples, or take away the samples, or destroy them. वो भी बहुत सारे ifs and buts के ऊपर relate होता है. अब जैसे कि आपको पता है, for implementation of any act we need to make rules. And so hence the central government has also come up with the Criminal Procedure Identification Rules of 2022. अब problems इसमें भी हैं, लोगों को एक एक करके करते हैं. So like we read in the act that, NCRB, let's just go back there. So NCRB will be the central agency who will maintain the records of all of these samples. So the rules have empowered the NCRB to specify guidelines for taking the measurements, for handling, storage, processing, matching, destruction, as well as disposal of these records. And these acts, we should have some knowledge, right? क्योंकि इसमें जीके में क्या आ सकता है, ये तो लीगल पैसेज में आ सकता है, if I'm right. नहीं बेटा, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, अभी जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के अंदर ये पूछा जा सकता है कि ये एक्ट ने कौन सी वाली एक्ट को रिप्लेस किया. अब ये बिल नहीं है, ये एक्ट है, तो एक्ट ऑब्वियसली एनफोर्सेबल है. ये कितने साल तक आपका सैंपल रख सकता है, या फिर कौन सी ऐसी बॉडी है दैट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, व्हिच इज योर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और इज इट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है. सो क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं. ओवरव्यू ही हम ले रहे हैं, डोंट वरी. बट डोंट थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि ये टाइम पास है, कि मतलब इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकते. यू आर गोइंग टू बिकम फ्यूचर लॉयर्स, सो यू ऑट टू नो वॉट एवर इज हैपनिंग
in our society. That is A. And secondly, many questions can be derived out of it, and we will just get down to that. पहले पढ़ना शुरू कर दो. पहले जब भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें सिफ्ट आउट ये मत करो कि भाई हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है. अरे समझ तो लो, फालतू में थोड़ी ना करवा रहे हैं. अच्छा, anyway. So the rules provide that an authorized police officer or a prison officer or a registered medical practitioner or any person skilled in taking the measurement can take such samples, can take such measurements. So not only a prison officer, they have also said registered medical practitioners or anyone who has been skilled in taking these measurements. All of them are included over here. Now, एक्ट ने डेलीगेट किया पावर टू द गवर्नमेंट. इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं कि लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल स्क्रूटनी करके कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस चीज को हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोल देते हैं, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं. सो एक्ट ने ये वाली अथॉरिटी दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड रूल्स ने फर्दर डेलीगेट कर दिया ये एनसीआरबी को. अब अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, this is your Siddharth Saravagi versus Board of Trustees for the Port of Kolkata and others 2014 ka case, wherein our Supreme Court says that whenever we have delegated an authority, the legislature has delegated this authority to make rules to another authority, which in this case is the central government. तो वो कहते उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर इन चीजों को डेलीगेट करके किसी और एंटिटी को नहीं दे सकता. मीनिंग देयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप रूल्स बनाओ कि कैसे हैंडल करना है, स्टोर करना है, प्रोसेस और मैच करना है इन सैंपल्स को. तो वो आप करेंगे, हाँ आपके लिए, मतलब आप रूल्स बना दीजिए एंड एनसीआरबी को बोल दीजिए ये रूल्स को अबाइड करके आपने स्टोरेज करनी है. But what you have done is you have further delegated these things to NCRB. And now NCRB will decide how to store and manage and do XYZ, which directly goes against the 2014 key judgment, right? So these delegated powers include guidelines to NCRB on maintaining the records. NCRB is also issuing guidelines for itself, and we will just understand ki kaun si wali guidelines it is issuing. But you see, if I am only issuing guidelines for myself, then it kind of goes against the principle of separation of powers, जो सिद्धार्थ सारावागी versus Board of Trustees में Supreme Court ने 2014 में already बोल रखा है. Now, the Act says that, you can destroy these samples when a person has been acquitted. Very simple. But however, the rules say that ये जो हमने records को destroy करना है, इसके लिए एक इंसान को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. Now you have to understand, the Act says that if I've been acquitted or I've been discharged as an accused, so hence my samples can be destroyed. But the rules say कि अगर मुझे ये samples को destroy करवाना है, तो I have to give it in written to NCRB. It is then that the NCRB will put it forth and maybe the samples will be destroyed. So in some other laws, also the onus of destroying personal information is on the authority that is maintaining the information. So for example, Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act of 2015, जिसमें बोला कि हर एक बच्चे को, except for the child who's been, convicted under a heinous offense, in such cases, the Juvenile Justice Board directs the police and says that, okay, let's destroy these records. But in this particular case, it is the person who's going to apply for the same. So that is how it is different. Now, under the Act, all convicts, arrested persons, as well as other people who've been detained under preventive detention, they are required to give these measurements. Now, rules specify that these measurements will not be taken. Now, which one are we talking about? We are talking about preventive law. So, abhi pada preventive detention ke andar we can take these samples. Rules say preventive detention ke andar samples sirf aur sirf tabhi de sakte ho jab a person has flouted rule under section 144, 145 of CRPC or section 151 of CRPC. इतना ज़्यादा इसके अंदर मत जाइए जैसे unlawful assembly आपको पता है. So एक्ट ने बोल दिया किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर we can take the samples. रूल्स ने बोल दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर only in such cases you can take these samples. Now, the Act says that the samples will be taken by police officers or a prisoner officer. The rules say that not only police officer or prisoner officer can take the samples, but also a registered medical practitioner or any person who has been authorized in this behalf.
right? So ये थोड़ा सा it is going against or it is going beyond the ambit of the act is what is being alleged these days. Now the rules specify that NCRB will issue its own SOPs, and which is what I said, like you're making your own SOPs. That means the act is delegating the authority to the central government, and the central government is further delegating it to NCRB, who's making his own standard operating procedure, wherein they are saying, we will specify the format in which the measurements should be taken, the devices which will be used to take these samples, how will we handle and store these particular samples. They will also provide for, what kind of digital format needs to be taken into account, encryption कैसे करनी है, मतलब किस तरीके से हमने सेव करना है, सेफ गार्ड करना है इन सैंपल्स को. तो वो सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? एनसीआरबी डिसाइड कर रहा है. सो दैट इज what people have an issue with. Now, the Act provides that the records will be destroyed in case the person has not been previously convicted, right, of an offense with imprisonment. चलो फाइन हो गया लेकिन imprisonment नहीं हुआ, तो ऐसे इंसान के samples को destroy किया जा सकता है. Or a person who has been released without a trial, discharged or acquitted, unless the magistrate says nothing doing, even if this person has been acquitted, I need the samples for XYZ reasons. NCRB ke rules ke accordingly, they say that, a nodal officer will recommend the destruction of the records after verifying that such records are not linked with any criminal cases. And the second thing is that you need to request for the destruction of such records, which was not really mentioned in the act or in any of the other acts. This has been mentioned for the first time. So that is another thing that people have an issue with. So this is your criminal procedure identification bill as well as the rules. तो जिसकी वजह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले केस में भी देख लिया था, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. इट वाज सेट अप ऑन 11th March 1986 and the director is Shri Vivek Gogia. So now a little bit about how this organization was made. Now crime record becomes very, very important. हमने थोड़ा फ्लिम्जी सी बात बता रही हूँ, पर जैसे कि हम लोगों ने सीआईडी के सीरियल्स वगैरह देखे हैं जहाँ पे हमें पता चलता है अच्छा ये फिंगरप्रिंट है, फटाफट से हमें पता चल जाता है कि किस इंसान ने गलत काम किया है. Now, why is the center doing this? When law and order is a matter of the state, the state ought to do this, right? But however, we are quasi-federal in nature. We are not completely federal in nature, and it is not, with great power comes great responsibility. So it is the responsibility as well as अथॉरिटी तो है यूनियन के पास, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो एड करे इन्वेस्टिगेशन में, हेल्प आउट करे स्टेट की. एंड विच इज व्हाई दे हैव ट्राइड मेनी मेथड्स टू इम्प्रूव द इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज, टू मॉडर्नाइज आवर पुलिस. So the Indian Police Commission 1902, this was for the first time that, we introduced a standard police forms and registers for information documentation at every level. Then in 1956 in Calcutta, we came up with the Central Fingerprint Bureau. So this bureau, as the name suggests, it used to maintain fingerprint key slips, and it used to facilitate the exchange of information between different organizations. Then 1964 में interstate crime record division बना दिया, जहाँ पे collection and dissemination of information not only of the fingerprint but otherwise also as to कौन सा इंसान है ना, correct दया, so कौन सा इंसान कहाँ पे कौन सा वाला offense कर रहा है, वो वाले information को एक्सचेंज करना. फिर इसके बाद 1970 की बात करें तो होम मिनिस्ट्री ने पहली बार स्कीम बनाई फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेस, एंड दे फॉर्मुलेटेड अ स्कीम wherein they put in 100 crores, which is a huge amount at that time, of course a huge amount even now for most of us, right, but not for the government वैसे. So 100 crores were put in for the modernization of the police forces, जहाँ पे 10 crore इन्होंने annually pro rata basis पे देना था. 50% was like a grant and 50% was like a loan, right? National Police Commission is eventually National Police Commission 1977, which was under CV. It is not PV Narasimha Rao, right? CV Narasimham ke under ye wali commission bani thi, which basically said that, we need some procedural and cultural changes in our state police so as to make a democratic and a welfare state. फिर एक committee बनाई on crime records 1978 में, and the government accepted the recommendations of the National Police Commission, which was made in 1977. Then they made a task force
is 1985 and eventually we made the NCRB. अब इसमें हमें क्या क्या लर्न करना है, तो बस इतना दिमाग में रखना कि पहली बार standardization of documentation happened in 1902, right? The second thing is which was the commission based on whose recommendation the NCRB was made. So you'll keep in mind National Police Commission of 1977. You can keep in mind the chairperson C.V. Narasimham, and 1986 headquarter, and the head is very, very important for us. Now, the next bill that we have to take up is the Electricity Amendment Bill of 2022. So, Ujjwal Bharat, Ujjwal Bhavishya, Uday Scheme, Discoms, Gencoms, we keep listening to these terms over and over again. And we do realize that, electricity is something which is very much required, not only for domestic purposes, but also for industrial purposes and also for the agricultural sector. अब इलेक्ट्रिसिटी का मामला जो होता है वो लिस्ट 3 का मामला होता है, कॉन्करेंट लिस्ट का मामला होता है, जिसके ऊपर बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट हैव टू कैन मेक लॉज, एंड ऑफ कोर्स आवर क्वाजी फेडरलिज्म इज made in such a manner that in case of a contradiction between a union law and a state law on a matter of list 3, the union law shall always prevail. ये सब कुछ तो हमें पता ही है. अब इस पर्टिकुलर बिल में क्या प्रॉब्लम है, अभी आज की डेट पे दिस हैज बीन गिवन टू अ स्टैंडिंग कमिटी. व्हाइल इट इज नॉट रियली मैंडेटरी टू गिव अ बिल टू अ स्टैंडिंग कमिटी, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल. नाउ इन दिस केस व्हाट आर द इश्यूज दैट पीपल आर फेसिंग? ए, द वर्कर्स इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, हमारी नौकरी जाने वाली है. The state says कि भाई तुमने हमसे पूछा ही नहीं, हमसे बिना पूछे तुमने लॉ बना दिया, which by the way is not necessary because as I said it is a matter of list 3. ठीक है, बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यूनियन हैज it has the authority to make laws on such matters. And thirdly, the biggest problem that people are facing is the agriculturists, the farmers. They say, हमें लग रहा है कि subsidy खत्म होने वाली है because they get a subsidy on electricity and that is what they have an issue with, right? Correct. So, Ministry of Power के अंदर आ जाता है. R.K. Singh is the cabinet minister. Now, the Electricity Amendment Bill, which was introduced in 2022, it seeks to amend the Electricity Act of 2003. तो ये दिमाग में रखना, 2003 की एक्ट को अमेंड करने के लिए ये 2022 में बिल बना, जहां पे the act, now when I use the term act I'm talking about 2003, when I'm using the term bill I'm talking about 2022. अब इस पर्टिकुलर एक्ट ने रेगुलेट किया इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को इन इंडिया और सेंटर और स्टेट पे रेगुलेटरी कमीशंस बना दी, which are basically taking care of intra-state and interstate matters. Now, the very first thing is multiple discoms in the same area. So you have to understand, one is a GenCom, one is a discom. A GenCom is a generating company, as the name suggests, जो power को generate करेंगे. Power generation करने के बाद they sell off this power and this agreement is called a power purchase agreement. तो मैंने, I am a GenCom, I have generated this power and I have sold it to you. You're a discom, you're going to distribute this power. Amongst many people, the commercial enterprises, the residential properties, right? फिर कहीं ना कहीं फ्री बी का कल्चर भी चल रहा है, तो फ्री में भी बिजली चली जाती है, फिर बिजली की चोरी भी हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज हैं, right? Like I said, you have to understand the concept. You need to know in this particular case कि Ministry of Power के अंदर है, R.K. Singh becomes important. Electricity Act कब बनी 2003 के अंदर, that becomes important. Electricity का मामला list 3 के अंदर आता है, concurrent list के अंदर, that becomes important. ये वाली जो body है, Central Electricity Regulatory Commission, that becomes important. So I will keep telling you what all is important, but you see the electricity sector is extremely important. आपने ये अगस्त के महीने में revamp distribution sector scheme भी पढ़ी है, जिसके अंदर उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य @ 2047 की बात पढ़ी है. COP27 की वजह से आपको पता है कि renewable energy, renewable sources of energy are very much required, क्योंकि हमने जाके अपने long term nationally determined commitments दे चुके हैं. So उस केस में all of these things become important. ठीक है, so आपको ये हूबहू line by line, you don't have to learn all of this. Having said that, certain static bits are important. Now let's go on to the first point, that is multiple discoms in the same area.
सो डिस्कॉम एज द नेम सजेस्ट, ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। अब ये जो एक्ट है 2003 वाली, इसने कहा एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हो सकती हैं, राइट। पर हर एक डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी को अपना खुद का नेटवर्क रखना पड़ेगा, और वही नेटवर्क यूज करके दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी इन द रेजिडेंशियल एंड द कमर्शियल एरियाज एंड द इंडस्ट्रियल एरियाज। बिल ने ये वाली रिमूव कर दी कमिटमेंट। बिल ने कहा कि कोई बात नहीं, एक डिस्कॉम के पास कोई पैराफिरनेलिया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक दूसरी डिस्कॉम उसी को यूज करके अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। सो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके अनदर डिस्कॉम कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस एंड दे कैन पे मी सम मनी फॉर इट। नाउ व्हाई शुड दे पे मी सम मनी फॉर इट, एंड व्हाई हैज द बिल सेड दैट? The biggest problem that we are facing in the power sector is the fact that the discoms are not making money. बिजली की चोरी जितना भी हम हंस लें इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। फ्री में जो हम लोग बिजली बांट रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, वहां से ये डिस्कॉम्स को पैसा नहीं मिल पा रहा उतना। डिसेमिनेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, एग्रीगेट टेक्निकल कॉस्ट लग रहे हैं, लेकिन जितना हम पैसा कमाना चाहते हैं उतना हम पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। अब इस केस में फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये हो गई हमारी कोल जनरेशन कंपनी, ये हो गई हमारी जनरेटिंग कंपनी, और ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी में पैसा नहीं आया तो उसने जेनकॉम को पैसा नहीं दिया, तो उसने ये वाली जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाली कंपनी है जिससे उसने सोर्सेज ऑफ एनर्जी खरीदे हैं, वो उसको पैसा नहीं दे पा रहे। एनपीएज हो जाते हैं क्योंकि हर एक कंपनी काम करने से पहले बैंक से लोन लेती है। सो बिकॉज दिस इज नॉट मेकिंग मनी, बैंक्स में भी प्रॉब्लम आ रही है और बाकी कंपनीज में भी इश्यूज आ रहे हैं। एंड सो हेंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम the government is continuously putting in a lot of money. अभी इसी साल 3 लाख करोड़ रुपए लगाए, हर साल पैसा लगा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट्स आर इंक्रीजिंग। एंड सो हमने बोला यार एक डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, दूसरा यूज कर ले, उसको थोड़ा सा पैसा दे दे और अपना काम निकलवा ले। इस तरीके से भी तो हम लोग पैसा कमा सकते हैं, विच इज वाई दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, राइट। बट यू सी, लाइक आई सेड, फेडरलिज्म के इश्यूज आ जाते हैं बहुत सारे और। Now, for consumers also, the bill says that it will enable a lot of competition. Because if you see, if you're using my infrastructure, if you're giving me money, I'm also very happy. And then it goes on to what is the quality of power distribution. कहाँ पे पावर कट ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे कम हो रहे हैं, किस तरीके से हम लोग अपने सर्विसेज दे पा रहे हैं लोगों को, and the rates that they are going to apply, someone will say thoda kam, someone will say thoda zyada, वैसे उसकी भी बात होगी in just a minute, right? So competition in the retail distribution of power, so that will be very good for the consumers. And so hence it will also facilitate non-discriminatory open access to the distribution network. So like I said, non-discriminatory, you as a discom can use my infrastructure, you can pay me whatever charges are there, and then you can also utilize it and give like very nice services to your customers. Then there is another thing that is happening कि हम लोगों ने मैक्सिमम टैरिफ सीलिंग की बात तो की रखी है, लेकिन अब हम मिनिमम टैरिफ सीलिंग्स की भी बात करेंगे। तो जब भी ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, ऑब्वियसली अगर मेरी दुकान से चीजें नहीं बिक रही हैं तो मैं क्या लगाऊंगी, डिस्काउंट लगाऊंगी, और मैं कितने लेवल का डिस्काउंट लगाऊंगी, इतना ज्यादा सस्ता कर दूंगी दैट दिस बिकम्स प्रेडेटरी इन नेचर। ध्यान से सुनो। So you're also selling the same goods and services, I'm also selling the same goods and services, I keep on putting a discount after discount after discount, मैं इतना ज्यादा इतने कम में दे दूंगी, and all that drama I'm doing. What am I actually trying to do here? I'm trying to destroy competition, which by the way is against the law. And one day जो चाइना करता है, so one day हम लोग क्या करने वाले हैं, बाकी सारे competition को हम लोग तोड़ देंगे और फिर जाके हम बेकार सर्विसेज दें, हम अपने रेट्स को कहीं गुना बढ़ा दें, कंज्यूमर को ही प्रॉब्लम होगी। सो एक मैक्सिमम लेवल होना चाहिए, एक मिनिमम लेवल होना चाहिए, और इसी में टैरिफ्स होने चाहिए। दैट इज व्हाट द बिल सेज। द नेक्स्ट थिंग इज पावर प्रोक्योरमेंट एंड टैरिफ. So of course, upon the grant of multiple licenses for the same area, the power cost will be shared by all the discoms. Like I just said, my infrastructure, you're also utilizing it. तो मैंने जब जेनकॉम से इलेक्ट्रिसिटी खरीदी तो कुछ पैसा मैंने दे दिया, कुछ आपने दे दिया, कुछ एक और ने दे दिया, तो हमारे कॉस्ट थोड़े डिवाइड हो रहे हैं, एंड बैठे बिठाए आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो हेंस माई फाइनेंशियल कंडीशन बिकम्स अ लिटिल बेटर.
Then is cross subsidy balancing fund. Oh, we've left this. We've not left it. We've just spoken about it. The maximum ceiling, and the bill also talks about the minimum tariff. So we've just spoken about this in the previous slide. Then is cross subsidy. Simple bhasha mein, the ones who are rich will pay more. The ones who are poor will pay less. Because the rich are paying more, we are okay with the fact that the poor are paying less. तो इंडस्ट्रीज के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा बढ़ा दो, और किसी को फ्री में भी दे सकते हो फिर आप बिजली, किसी को सस्ते में दे सकते हो. सो रिच इज पेइंग मोर एंड द पुअर आर पेइंग लेस. दिस इज नोन एज क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग. नाउ द बिल सेज कि इस पर्टिकुलर चीज में हम लोगों ने क्या कर देना है. सो द फंड, वी विल क्रिएट अ फंड आउट ऑफ दिस, राइट. सो बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा. बहुत सारी इंडस्ट्रीज जब बहुत ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट दे देंगी, वो फंड जब हमारे पास आ जाएगा तो हम डिस्कॉम्स को पैसा दे पाएंगे. व्हाट इफ आई एम अ डिस्कॉम एंड आई एम इन एन एरिया वेयर there are lots and lots of industries, very less residential areas and very less such areas जहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी है कि सस्ते में आपने बिजली देनी है या फ्री में बिजली देनी है. तो मैं ये इतना ज्यादा पैसा कमा के कुछ मैंने इस फंड में डाल दिया जो सरकारी फंड है, एंड देन गवर्नमेंट कैन यूज दिस मनी विच आई हैव जनरेटेड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. ऑफ कोर्स आई ऑल्सो गेट टू कीप सम मनी, एंड द गवर्नमेंट कैन यूज दिस फंड to go and give it to a discom जो बेचारा इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया. Then is licenses for distribution in multiple states. जहां पे भी interstate की बात आ जाती है वहां पे central authority आ जाती है. We'll just talk about these central authorities and who are heading it and कहां पे ये चीज vacant है. So in this case also, अगर एक distribution company कहती है मुझे पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ तीनों में distribute करना है, then the center will make laws for the same. Then payment of security. Now, you see, as a discom, when I'm doing some work, मैंने जेनकॉम से पावर ले ली और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया. अभी तक जेनकॉम बेचारे को कोई पैसा मिला नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा. आई विल पे सम लिटिल बिट ऑफ सिक्योरिटी. I will give them like a little bit of payment saying, listen, I will pay you back. Only and only when I pay this security will I get that particular electricity, that power will be dispatched to me. Otherwise, it will not be dispatched to me. Simple as that. Then is contract enforcement कि कल जाके अगर जो भी हम लोगों ने पावर परचेज अग्रीमेंट की है कि मैंने एज अ डिस्कॉम अपनी लॉसेस थोड़े ज्यादा ही दिखा दिए जबकि पैसा है मेरे पास, एंड जेनकॉम कहता मेरा पैसा पूरा वापस दे, पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी तो कर दिया पर बाकी पैसा तो तू दे नहीं रही, एंड आई एम जस्ट टरकाइंग दैट पर्सन, नहीं कल परसों नरसों एंड ऑल ऑफ दैट. सो जिसके लिए हमने इन कमीशंस को जो सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल पे हैं, the bill says that they will have the powers of a civil court, like quasi judicial authorities bana diya inko, jahan pe they can call a witness, they can get evidences, they can take documents upon affidavits, they can do all of that. So that is contract enforcement. Then also renewable purchase obligation. So COP27 दिमाग में आना चाहिए, COP26 दिमाग में आना चाहिए, जहां पे हम बोल के आ चुके हैं कि हम लोग रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इतना यूटिलाइज कर रहे हैं. सो ना इन दिस केस ये डिस्कॉम्स को बोला है कि जब भी तुम किसी जेनरेटिंग कंपनी से पावर खरीद रहे हो, तो अगर तुम्हें इतना पावर खरीदना है तो कुछ परसेंटेज तुम्हें रेन्यूएबल सोर्सेज से खरीदना पड़ेगा, एंड दैट इज मैंडेटरी. And in case you don't do that, then we will put a penalty upon you. तो वो कितना परसेंटेज है, तो वो कहते कि it will be prescribed by the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि भाई ये स्टेट में भी जो एजेंसीज हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, ये कितना ज्यादा एनर्जी को परचेज करने वाले हैं रेन्यूएबल सोर्सेज से. स्टेट को लगा हमसे पूछा नहीं, तुम कहाँ से डिसाइड कर लोगे, सो दैट इज व्हाई दे हैव अ प्रॉब्लम. बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो दैट दिस शुड हैपन, एंड इन केस सच अ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी इज नॉट एबल टू परचेज दैट मच, then we will put a penalty of 25 paisa or 50 paisa per kilowatt for the shortfall. So you see, in one way state government is also correct कि मतलब अगर sources of renewable energy है ही नहीं तो वो डिस्कॉम बेचारा कहाँ से खरीद लेगा. So hence that kind of synergy needs to happen, but this is a good point. Then is the selection committee for the state based commission. Now state electricity regulatory commission में ये कहते कि central government will nominate a member to this particular commission. पहले क्या बोलते थे
कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है ना, वो अपने एक मेंबर को या रेकमेंड करेगा स्टेट में एक मेंबर को। अब बोला सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, तो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट पीपल हैव एन इशू विथ। फिर उसके बाद कमीशन का और जो एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, इनके थोड़े से मेंबर्स को हमने चेंज कर दिया, कि मतलब थोड़े से मेंबर्स और बढ़ा दिए। वो अलग बात है कि इन दोनों कमीशंस में आज की डेट पे, वो ट्राइब्यूनल में भी, and that commission also, they don't have a chairperson right now. We will just talk about it. So there are two bodies that they have spoken about over here. See, under the act for selection committee, no, under the act is 2003, the chairperson of the Central Electricity Authority or the chairperson of CERC. So that means these are two alag organization. Let's deal with them. So the first is your Central Electricity Authority. क्या होती है ये? It is an organization that was first constituted under the Electricity Act of 1948, but that was repealed by the 2003 Act, जिसको आज की डेट पे हम लोगों ने बिल बना के अमेंड करने की कोशिश की है, राइट? पहले ये पार्ट टाइम बॉडी थी, फिर इसको फुल टाइम बॉडी बना दिया। इसका विजन क्या है? द विजन इज 24/7 power supply of adequate quality to all the consumers in the country. So that is what it is working as, कि हमको हमारी बिजली 24/7 मिल जाए और adequate quality की electricity मिले. And the chairperson of this particular authority is Prakash S. Mahaske. ठीक है, this is also under Ministry of Power. Now, which is that second authority? The second authority is a regulatory commission. So regulatory commission भी 2003 के अंडर ही बनी है, right? This is also a statutory body. वो section 73 के अंदर ये बनी है, ये section 76 के अंदर बनी है। ये हमको बिजली मिलनी चाहिए 24/7 in a very, very proper manner. This one talks about good competition, efficiency, economy. So it is regulating the entire sector. That is just customer based. This is regulating the entire sector, also looking at the supply, demand, the quality, the efficiency, and all of the above. Now, this particular regulatory commission does not have a head right now. So P.K. Pujari was the chairperson who was appointed in 2018, and उनका extension भी किया tenure का 2022 जून में ये हट गए, पर उसके बाद किसी और को अभी तक appoint नहीं किया है. Now, the next bill that we are going to talk about is our Competition Amendment Bill of 2022. Now, Competition Amendment Bill of 2022, what is this talking about, and why is this very, very important for us? तो इसमें जैसे कि गूगल वाला केस आपने देखा था, जहाँ पे it has slapped a lot of penalty on Google. In fact, it has slapped a lot of penalty on many, many other enterprises. It aims to seek not a perfect competition, but a state wherein there is no monopoly, there is no monopolistic situation. Mergers and acquisition अगर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि big mergers are happening because of which वो बेचारे जो छोटे enterprises हैं उनका बैंड ही बज जाए. So all of that is regulated by the Competition Act of 2002, which is why the Competition Commission of India becomes very, very important from our examination perspectives. So पहली बात तो ये है कि रेगुलेशन, दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेरी सिंपल. तो अब ये लोग रेगुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू. किस चीज को रेगुलेट कर रहे हैं? मर्जर, एक्विजिशन एंड अमेलगमेशन ऑफ एंटरप्राइजेस. Now, according to our constitution, according to our fundamental rights, Article 31A, it says जब भी किसी corporation का merger, amalgamation, acquisition होता है, and if it is done in public interest, then you and I, we cannot go against this, claiming Article 14, Article 19 of the Constitution. So that is also a fundamental right, because the needs of a lot of people is more important than the needs of few. But still we need to see कि ये mergers acquisitions से कोई monopolistic tendency नहीं बननी चाहिए. तो क्या होता है कि ये particular act, जब ये mergers and acquisition में CCI का approval हमें लेना होता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं turnover देखते होते थे या फिर assets देखते होते थे, combined assets of those corporations या combined turnover of this corporation. This bill is saying let's look at the transaction value, and I'll give you an example for that, like what are they talking about. So for example, जैसे कि sometimes
the assets are not much of the combined enterprise. They might even be running into losses. लेकिन क्या है कि ट्रांजैक्शन पैसा बहुत लगाया होगा वो चीज को अक्वायर करने के लिए, और वो इसीलिए अक्वायर किया ताकि बाकी किसी का बिजनेस ना चले. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एंड व्हाट्सएप. सो नाउ फेसबुक ने जब अक्वायर किया व्हाट्सएप को 2014 में, तो उन्होंने पैसा दिया 19 बिलियन यूएस डॉलर्स. 19 बिलियन यूएस डॉलर्स दे दिए जस्ट टू बाय व्हाट्सएप, जहां पे हम फ्री में मैसेजेस कर रहे हैं. ना बिटवीन जनवरी टू जून 2014 व्हाट्सएप का रेवेन्यू था 15 मिलियन यूएस डॉलर्स, एंड इन्होंने रिपोर्ट किया एक नेट लॉस ऑफ 233 मिलियन. मतलब रेवेन्यू इतना कम और लॉसेस इतने ज्यादा. तो पहले क्या होता था, सीसीआई जब ये देखता था तो ये एसेट्स वगैरह ही देखता था, है ना, या फिर टर्नओवर देखता था, और फिर वो बोलता था अच्छा ऐसे टाइप के केस में वो कुछ बोल नहीं पाता था. अब बिकॉज व्हाट्सएप का रेवेन्यू इतना कम है, लॉसेस इतने सारे हैं, तो इट इज नॉट इवन कंसिडर्ड टू बी बैड merger or something which is against competition because law हमारा ये कहता है. पर at the end of the day आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि WhatsApp का इतना बड़ा मार्केट है in the messaging field, because of which a certain enterprise is doing so well. So उसी चीज को रोकने के लिए और उसी चीज के ऊपर कुछ checks and balances लगाने के लिए हमने ये चीज की है. The second thing is the time limit for approval of the combinations. तो पहले कहते 210 days में करते होते थे. CCI used to give this approval. जैसे आपने पढ़ा है ना, एयर एशिया और एयर इंडिया का मर्जर हो गया तो सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया, तो वो 210 डेज में देते होते थे, कहते अभी 150 डेज में देंगे. अभी देखेंगे ग्रीन चैनल करके इन्होंने बनाया था 2019 में, जिस वजह से ये फटाफट से अप्रूवल हो तो जाएगा, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जो कॉर्पोरेशन सीसीआई के पास आ रही है वो सच बोल रही है. And that is exactly what the previous chairperson, Ashok Kumar Gupta, also said. He said that is okay, we will give the permission to you in 150 days, but you also have to be very, very honest, क्योंकि इतने कम दिनों में it is not possible for us to look at everything. लेकिन अगर बाद में पता चल गया कि झूठ बोल के तुम लोगों ने ये मर्जर की अप्रूवल लिया है, तो ऑब्वियसली पेनल्टी तो लगेगी. Then is definition of control for the classification of combinations. So पहले क्या होता था कि हम लोग control को कैसे define करते थे, somebody who's actually working, who is a part of the management, who's controlling the affairs of the company. अब कहते anyone who has the ability to exercise material influence. So ऐसा है कि दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है और एक तीसरा इंसान जो इन दोनों कंपनीज में है नहीं, लेकिन दोनों के हेड्स कहीं ना कहीं इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं, या फिर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जिसकी बात सुन के ये वाला मर्जर एंड एक्विजिशन हो रही है. सो उस इंसान के ऊपर भी हम लोग वो केस डालेंगे, राइट. देन इज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कि कुछ ऑफेंसेस के ऊपर फाइन की जगह पेनल्टी लगेगी. सो फाइन इज अ टर्म दैट वी यूटिलाइज कि जब कोर्ट में गए, बोला कि अच्छा पर्सन इज एक्चुअली गिल्टी, फिर जाके उसको जो पैसा देना है तो बोल दिया फाइन. पेनल्टी के लिए यू डोंट रियली हैव टू हैव अ प्रोसिक्यूशन. सो हमने डीक्रिमिनलाइज भी करे कुछ ऑफेंसेस फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. देन दे हैव आल्सो डिफाइंड व्हाट आर एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट्स, जहां पे आप जानबूझ के directly, indirectly, you're trying to determine the sale, right? You're trying to control the production, right? And bill also adds that the enterprises not engaged in identical similar businesses shall be presumed to be a part of such an agreement if they actively participate in the furtherance. यही वाला पॉइंट दोबारा से हो रहा है जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखा था, कि चलो ठीक है, अगर तो तुम कंट्रोलर मैनेज कर रहे हो और उसके साथ तुम ऐसे टाइप की सिचुएशन लेकर आ रहे हो जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, तो तुम गलत हो ही. लेकिन इवन इफ यू आर नॉट एक्चुअली डी फैक्टो, तुम वहां पे बैठे नहीं हो, बट तुम्हारी बात सुन के ये सारा काम हो रहा है, देन ऑल्सो यू विल बी लायबल फॉर दीज एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट्स. Then settlement or commitment in the anti-competitive proceedings. So you see, the CCI will put a proceeding against you if you are abusing your dominant position or you are entering into anti-competitive agreements, right? CCI को ये bill के द्वारा they are also saying that you can stop these inquiry proceedings. How will you stop it? मतलब एक तो हो गया पूरा का पूरा फाइन तक बात गई, कहीं ना कहीं पेनल्टी तक बात गई. एक हो गया पहले ही सेटल हो गए, बोला ठीक है, सॉरी, वी वर ट्राइंग टू अब्यूज आवर पोजीशन, बट वी आर वेरी सॉरी एंड वी आर गिविंग यू दिस मच मनी, काइंडली गिव अस अनदर चांस.
Or the second thing is giving a commitment. Please don't worry, we will not give these freebies from the next time, and we are giving this to you in written. In case we do this in the future, then kindly do a proceeding against us. Don't do it right now. So, the inquiry commission can say, chalo theek hai, let's give them another chance. And Director General का investigation का scope बढ़ा दिया. डायरेक्टर जनरल सीसीआई का जब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो वो बैंकर से पूछ सकता था, मैनेजमेंट से पूछ सकता था. अकॉर्डिंग टू द बिल, नाउ ही कैन आल्सो टेक डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम लीगल एडवाइजर्स, व्हिच इज वेरी वियर्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इंडियन एविडेंस एक्ट सेज कि no barrister, no lawyer, no attorney, no pleader can ever be forced to disclose any confidential information that the person has shared with his client. The whole point is that it's a fiduciary relationship, right? Confidential information है ना. लेकिन यहाँ पे बिल में ये लिख दिया कि डायरेक्टर जनरल वो लॉयर के ऑफिस में या लीगल एडवाइजर के ऑफिस में जाके भी बोल सकता है कि दिखा दो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो तुमने अपने क्लाइंट को दिए थे ये मर्जर करने से पहले. सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग, राइट. नाउ इट ऑल्सो सेज कि अगर आप नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाके अगर अपील करना चाहते हो, कल जाके सीसीआई ने आपका शटर डाउन कर दिया और आप अपील करना चाहते हो कि भाई ये तो मेरी बिजनेस को रोक रहा है, तो जितना भी इन्वॉल्व है पैसा वहां पे पेनल्टी का, उसका 25% आपको देना पड़ेगा. सी, पहले भी पैसा देना होता था, बट इट वाज नेवर प्रिस्क्राइब बाय द लेजिस्लेचर. इट वाज टोल्ड बाय एनसीएलटी. सो इन सर्टेन केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस, एनसीएलटी यूज्ड टू से कि जितना भी पेनल्टी है उसका 10% दे दो, फिर अपील करने के लिए आ जाओ. अब बोला नहीं, 25% तो देना ही देना पड़ेगा. सो अगेन इट्स अ बिल. लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू this one. Now, what is important for us is the Competition Commission of India, statutory body made under our Act of 2002, and acting chairperson right now is Sangeeta Verma. Okay, so Ashok Kumar Gupta was the chairman, but then he sort of resigned from his position, and October में ही संगीता वर्मा को acting chairperson बना दिया है. फिर आ जाता है एक और चीज जो मैंने आपको बोला था कि 210 डेज को 150 में कैसे कर लेंगे. तो ये ग्रीन चैनल इज द नेम ऑफ द चैनल, जहां पे बोला कि भाई सच सच बोल दो, हम लोग तुम्हारी बात मान लेंगे. ऑफ कोर्स ऐसे आंखें बंद करके नहीं, बट फटाफट से हम अप्रूवल दे देंगे. सो दिस पर्टिकुलर ग्रीन चैनल विल हेल्प द सीसीआई, एंड दिस वाज recommended by the Injeti Srinivas committee. So ये तो is in effect since 2019, doing very very well. Okay, so you can keep this in mind. Now the next one is your New Delhi International Arbitration Center. बहुत ही simple है ये. Arbitration Center, पहले इसका नाम था New Delhi International Arbitration Center, और अब इसका नाम बना दिया International Center for Alternative Dispute Resolution. That is all that they have done. बाकी drafting error and all you don't have to look at. अच्छा, क्यों नाम चेंज कर दिया न्यू दिल्ली से International Center for Alternative Dispute? बिकॉज दे से ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए है, और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड फॉरेन आर्बिट्रेशन दोनों केसेस यहाँ पे जा सकते हैं. Another thing that they have included over here is because arbitration center का नाम हटा के alternative dispute resolution बना दिया, तो hence this particular thing is saying कि अब बहुत सारे और टाइप के alternative dispute resolutions भी यहाँ पे हो सकते हैं. So possibly mediation, conciliation can also take place over here. So these are the two things under Ministry of Law and Justice. Very very simple. So like I said, New Delhi International Arbitration Center पढ़ के लगता है कि it is very very city centric, whereas it is nation centric. Then comes your Energy Conservation Amendment Bill of 2022. Super duper important because of COP27. Let's try and understand क्या क्या हमें पढ़ना है. अब पहली बात तो ये है कि ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट हमने बनाया ही क्यों. हमारे पास है तो सही एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, पर 2001 से लेके 2022 में यार एनर्जी का पूरा मायना बदल चुका है. The concept of energy, the concept of renewable energy, sustainable development is here to stay. We've gone and we've said COP27 में XYZ 2047 तक बिल्कुल ही कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो कार्बन फुटप्रिंट, ये वो सब बोल दिया. सो जिसके लिए हमें आज से शुरू करना पड़ेगा. अभी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में तो बोल दिया कि डिस्कॉम को थोड़ा बहुत तो रिन्यूएबल पावर भी उसको बेचना पड़ेगा. और यहाँ पे हमने बात की है कार्बन ट्रेडिंग के बारे में. सो एक एक करके करते हैं. नाउ 2001 की एक्ट ने क्या क्या बात की.
कुछ इसने पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ इसने स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी, और कुछ इसने एक ऐसी बॉडी बनाई, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, which is basically going to give us recommendations with respect to the regulation and the standardization of energy consumption, कि मतलब कैसी energy consumption होनी चाहिए, appliances की कितनी होनी चाहिए, vehicles की कितनी होनी चाहिए, industrial, commercial buildings, so on and so forth. अभी ये बिल में residential buildings भी आ जाएंगी, we will just talk about it, okay? So, as per the estimate by the Bureau, right, programs for efficient energy use has helped India save about 28 million tons of oil equivalent energy in 2019 to 20. And ये वाली energy को use करके we can give मतलब 185 करोड़ 20 wattage के LED bulbs हम लोग दे सकते हैं लोगों को 24/7 for 1 year. So that is the charm of using renewable energy or having certain standards set कि भाई इससे ज्यादा आपने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज नहीं करना, अगर करेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी. सो during the COP26 summit of 2021, India had made the following commitments: that we will reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons by 2030 and reduction of the carbon intensity of the economy by 45% by 2030 over 2005 levels. Now, carbon intensity की definition अगर हम लोग देखें तो this is the amount of the volume of carbon emission per unit of GDP. So इतना खर्चा करने के लिए हम लोगों को इतना कार्बन एमिशन करना पड़ा. Can you please explain what is arbitration? For sure. So arbitration पहली बात तो alternative source of dispute resolution है. So अंशज एंड हिमांश का एग्जाम्पल लेते हैं. अंशज और हिमांश के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है. अब क्या है कि तुम लोग एक ऐसे टाइप का डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहते हो जहां पे एक तो ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, दूसरी बात you don't want to go to the court of law, and so you want it to be final and binding also. So arbitration के अंदर क्या हो जाता है, you go to a neutral third party. एक लॉ फर्म के पास आप चले गए, लॉ फर्म आर्बिट्रेशन भी करवा रहा है. जे सागर एसोसिएट्स में चले गए मुंबई में, आपने बोला हमारी 2 कंपनीज हैं, हमने आर्बिट्रेशन करानी है, हमारी प्रॉब्लम है पर हमें कोर्ट में नहीं जाना, नहीं तो सारे बात करने लग जाएंगे और हमारी ट्रेड सीक्रेट्स भी बाहर हो जाएंगी. अब वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी आ गई, आप तीनों ने एक अग्रीमेंट साइन कर ली, और वहां पे अग्रीमेंट में आपने बोला है कि हिमांश ने भी बोल दिया कि मैं भी आई विल आल्सो अबाइड बाय दिस द डिसीजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन, एंड अंशज हैज आल्सो सेड द सेम दैट आई विल आल्सो अबाइड बाय व्हाटएवर इज सेड ओवर हियर. फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो आर्बिट्रेटर है वो एक अवार्ड मतलब कि एक डिसीजन दे देगा, एंड यू विल हैव टू अबाइड बाय दैट डिसीजन. तो आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, आपको कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉन्फिडेंशियल भी रह गया. हाँ, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, वो अलग बात है. अब इसके बाद अगर अंशज यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन तो मानना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन फिर जाके मतलब यू कैन स्टार्ट ऑफ दिस केस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेवल फ्रॉम अ लोअर कोर्ट. तो इसमें क्या है, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं अप्लाई होगा आर्बिट्रेशन में, वहां पे आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट को अप्लाई किया जाएगा. इज दैट ओके अंशज? यूजुअली जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो यही इसी तरीके से रिजॉल्व किए जाते हैं, ठीक है. Now coming back here, now against this backdrop हम लोगों ने ये पर्टिकुलर एक्ट बिल बना दिया जहां पे हम COP26 के गोल्स को भी फुलफिल करना चाहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी यूटिलाइज करना चाहते हैं. अब इसमें सबसे पहले आ गया आपका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग. लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. एक हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक हो गया आपका टाटास, ठीक है. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटास को बोल दिया कि आप X यूनिट ऑफ कार्बन एमिशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में. अब टाटास ने X/2 कर लिया और ये जो आपका रिलायंस है इसने X किया. अभी इसको और भी चाहिए तो इसको पेनल्टी देना पड़ेगा. या फिर ये क्या कर सकता है, ये टाटास के पास जा सकता है, बोल सकता है अच्छा यार तूने तो सिर्फ 50% एमिशन की है, तो प्लीज मेरे को ये बाकी का ट्रेड दे दे, मतलब ट्रेड कर दे कि मैं ये वाला यूज कर लूं, इसके बजाय मैं तेरे को इतना इतना पैसा दे देता हूं. तो ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे इसको, और इसी तरीके से he will be able to use this particular do these particular carbon emissions. So that is your carbon credit trading. Obligation to use non-fossil
सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो हम लोगों ने अब क्या कर दिया, हमने बोला कि हर एक बिल्डिंग में, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज फिक्स कर देनी है कि आपने इससे ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं करनी. ठीक है, दैट इज एन ऑब्लिगेशन अपॉन यू. अगर नहीं किया ये, तो you'll have to pay some money, like let's say penalty of 10 lakh rupees you'll have to pay. ठीक है. फिर एनर्जी कंजर्वेशन कोड्स फॉर बिल्डिंग, इस बिल में हमने नॉट ओनली फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स, वी हैव आल्सो स्पोकन अबाउट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कि ठीक है, वहां पे कार्बन ट्रेडिंग नहीं होने वाली कि अंसल अपार्टमेंट ने इतना किया तो फिर बाकी दूसरे अपार्टमेंट्स को दे दिया हम लोगों ने कि तुम कर लो कार्बन एमिशन. ट्रेडिंग नहीं होगा, पर एमिशन के लिए हम लोगों ने एक कोड बना देना है इवन फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जहां पे फिर सोलर पैनल्स लगाओ या जिस भी तरीके से, which you'll have to use renewable sources of energy because your carbon emission should be very, very less. Okay. Then a standardization for vehicles and vessels will also be there, जहां पे बिल ने expand कर दिया इस स्कोप को और इन्होंने ships and boats के बारे में भी बात कर दी, and they have also increased the penalty. Then composition of the governing council of BEE, the Bureau of Energy Efficiency, किया क्या है, number of members को increase कर दिया है. पहले between 20 to 26 बोल रहे थे, अब बिल में कहते हैं 30 to 31 members होने चाहिए, right? So that is what they have said with respect to the composition. Now in this particular thing, what is the issue that people are facing? Now the very first thing is some people are like, ये Ministry of Power के अंदर होना ही नहीं चाहिए, ये Ministry of Environment के अंदर होना चाहिए. क्योंकि जब आप Ministry of Power की बात कर रहे हो तो इसके पास क्या अथॉरिटी है? As per the Government of India Allocation of Business Rules 1961, what is the job of Ministry of Power? एक तो to make general policy in the power sector and to make policies and to coordinate in the power sector, and the second thing is to talk about energy conservation, energy efficiency. तो चलो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस की बात करें तो दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू द पावर सेक्टर, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो कहते हैं बहुत सारे सेक्टर्स आर इन्वॉल्व. इनफैक्ट फॉरेस्ट इज इन्वॉल्व, क्योंकि वो तो कार्बन सिंक है, वो तो आपका कार्बन एमिशन को अपने अंदर घसीट रहा है. सो दे से this particular implementation authority should be given to Ministry of Environment. Why? Because वो same rules कहते हैं कि climate change and related matters are under this. तो चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं लोग एंड कह रहे हैं कि ऐसे टाइप के लॉज जो यूएस, यूके, स्विट्जरलैंड में है, वहां पे भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आया नहीं है. विच इज फाइन. आई मीन, अगर मिनिस्ट्री ऑफ पावर कर सकता है काम तो कर ले, अगर नहीं कर सकता तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को दे दे. पॉइंट इज कर ले, क्योंकि बोल तो रखा है और जरूरी भी है हमारे लिए. Now the important thing from a competitive examination perspective, just keep this in mind that the act is just talking about industries, but the bill is also talking about residential places, and putting certain codes even for the residential apartments. Then is also carbon trading, and Bureau of Energy Efficiency की composition को increase कर दिया है इस particular bill ने. Now what is this bureau? So this Bureau of Energy Efficiency, it was made under the Energy Conservation Act of 2001, and इसका mission क्या है? To make policies with respect to self regulation, कि मतलब यही एनर्जी सेक्टर की रेगुलेशन करनी. एंड डायरेक्टर जनरल इज अभय बकरे. ठीक है. सो जो भी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए जो भी अभी हमने पढ़ा है, वो रेगुलेटिंग एजेंसी इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. राइट. देन इज योर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये चीज आ जाती है. पहले तो समझ लीजिए कि व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, एंड देन बहुत क्विकली, मतलब हमने नाम बदला है और कुछ चीजें बदली हैं इस यूनिवर्सिटी में. Now, Dharmendra Pradhan, what did he say when he was introducing this particular bill? He says, today aviation has reached remote locations in the country. Yes, but we can do that. So today aviation has reached remote locations in the country. We are talking about driverless train engines, and all of this is based on a technology, and we need a specific skill. एंड इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी रख दिया है, और ये सारी चीजें हमें इस गति शक्ति यूनिवर्सिटी में मिलेगी.
तो कहते by 2025 machines will be doing more work than the labor, the human beings, right? And the human beings need to operate these machines, and for that they need capacity building programs. And so hence this is the first research, entrepreneurship and multidisciplinary university. एक डिसिप्लिन नहीं सिखाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा देगा, जिसके कारण हमारी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और हमारे देश के लिए भी बेटर हो जाएगा. सो एंड हमारे को ऐसे टाइप की एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जो जॉब प्रोवाइड करे, राइट? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग, दैट हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, सब कुछ मिल जाता है, जॉब तो मिल ही नहीं रही है. तो इट शुड बी वेरी वेरी जॉब ओरिएंटेड इज व्हाट ही इज सेइंग, राइट? And so he says that is why, because there are 25 crore people in the age group of 15 to 25 years in the country, but only 11 crore students are studying in various schools and institutions, and 14 crore are getting into unskilled job ecosystem. So we need to make sure कि हम इस percentage को बढ़ाएं. So अब इसमें हमने करा क्या है? So here this is an act, beta, है ना? It has received the president's assent. So the key features are गति शक्ति विश्वविद्यालय. तो एक्ट ने क्या किया, ये नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन जो वडोदरा में है, इसको गति शक्ति विश्वविद्यालय बना दिया, which will be a central university, right? And it will be completely sponsored by the central government. Scope of education, abhi pad liya, transportation, technology, management, multidisciplinary, right? And skill development सिखाया जाएगा. And क्या पता है एक बार ये इधर बन जाए तो फिर ये अब्रॉड भी चले जाए हमारी ये सारी की सारी हमारी यूनिवर्सिटी, राइट? Then is according to the statement of objects and reasons, establishment will also need trained talent. क्यों? पढ़ाने के लिए भी तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, that is important. फिर ये वाइस चांसलर भी अपॉइंट करेंगे नया, कि मतलब when the act is notified within 6 months, a new vice chancellor will come up, or maybe even earlier than that. So that is your Central Universities Amendment, very, very simple. Next is your Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems, Prohibition of Unlawful Activities, Act of 2022. अब यहाँ पे पहले तो हम लोग देख लें कि ये मास डिस्ट्रक्शन है क्या, एंड देन बहुत ही सिंपल सा एक पेज की ये चीज है, वी विल कंप्लीट दैट. नाउ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अगर कोई पूछे कि कहाँ पे सबसे पहली बार यूज हुआ था, तो इट वाज यूज्ड बाय द लीडर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, the Archbishop of Canterbury, in 1937, when he was referring to the aerial bombing of civilians in the Basque town by German and Italian fascists, ये Spanish Civil War के टाइम पे. फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये weapons of mass destruction term को यूज किया है, जॉर्ज बुश ने किया है, टोनी ब्लेयर ने किया है, right? Then when they were talking about Saddam Hussein and all of that, कोई सिंगल डेफिनेशन, यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बट वी कैन अंडरस्टैंड इट टू मीन कोई न्यूक्लियर वेपन हो गया, बायोलॉजिकल वेपन हो गया, केमिकल वेपन हो गया, लाइक दैट. इंडिया की एक्ट जो है 2005 की, जिसको अमेंड किया है 2022 की एक्ट ने, दे डिफाइन अ बायोलॉजिकल वेपन as a microbial or other biological agent or toxin that have no justification for any peaceful purpose, and they are just mere weapons. They are toxins and they are used only for hostile purposes in armed conflicts. और दूसरा इन्होंने define किया है chemical weapons को. Again, toxic chemicals, जहाँ पे we are not using them for peaceful purposes, they are used as weapons and as devices because of their toxic properties. Now, what have we done over here? We already had an act, and that act was 2005 की act. So 2022 में हम लोगों ने ऐसा क्या कर लिया? बड़ी सिंपल सी बात है. पहले वाली जो 2005 की act है, this was basically prohibiting unlawful activities such as manufacturing mass of weapon of mass destruction, transportation or transfer. The bill, which has been converted into an act, is also prohibiting financing such an activity. तो पैसा दे रहे हो किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए या इसको एड करने के लिए, तो that is also a problem. You will be put behind the bars for the same, simple as that. So financing such a thing is also very much an offense.
almost as much as वही है, attempt abetment to anything is also an offense, right? So you're aiding, intentionally aiding it, पैसा वैसा दे रहे हो आप, चाहे directly चाहे indirectly, you will be liable for the same. So this is your weapon of mass destruction. So we are going on to the last one. ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और एक चाइल्ड मैरिज वाला है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, सारे खत्म कर लेंगे. I hope you can understand what you have to study in these things. The organizations that are important, the chairperson that is important. In case it is an act, very, very important for us. In case it's a bill, just have a basic understanding as to what the previous act spoke about and क्या changes हम लोग कर रहे हैं, वो बहुत basic आपको करने की जरूरत, but organizations are very, very important. So then is a Delhi Municipal Corporation Amendment Bill of 2022. The next time we'll also talk about the Government of NCT of Delhi Act. तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी चीज हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, उसको उनकी अथॉरिटी थोड़ी 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 छीन के सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रही. सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्या बढ़िया स्पेलिंग मैंने लिखी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट? सो इसके अंदर भी जो भी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो पहले दिल्ली गवर्नमेंट ले रही थी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो पहली बात तो बाय 2011 का अमेंडमेंट ऑफ द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1957, हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में कन्वर्ट कर दिया था. अब ये जो एक्ट है, एक्ट बन चुकी है, इट रिप्लेसेस दीज 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विद 1 कॉर्पोरेशन विच इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली. तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अभी उसको फिर से एक कर दिया. Then is powers of the Delhi government. अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, जो भी पावर्स थी अब उठा के सेंटर को दे दी. क्या पावर्स? कि कितने काउंसलर्स होने चाहिए, हाउ मेनी सीट्स शुड यू रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, हाउ मेनी कॉर्पोरेशन, मतलब कॉर्पोरेशंस को कितने एरिया या वार्ड्स में डिवाइड करना है. जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, वैसे लोकल गवर्नमेंट में वार्ड्स बोल देते हैं, राइट? मैटर्स सच एज delimitation of those wards, salaries, allowances of the commissioner, the people who are leading it, right? Loans कितने मिलने चाहिए, wastage और misapplication of property के ऊपर क्या करना चाहिए, what kind of suits should be there, right? So the bill, which has been converted into an act, empowers the central government to decide on such matters. It is no longer under the Delhi government. फिर कितने काउंसलर्स होने चाहिए, अभी मैंने आपको बताया. सो फॉर एग्जांपल, ये जो एक्ट है, इसने ये बोला है कि 250 से ज्यादा आपके काउंसलर्स हो ही नहीं सकते, वार्ड काउंसलर्स, राइट? देन इज रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, की जो डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज होते थे उनको तो रिमूव ही कर दिया, ठीक है? तो बोला हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन होना चाहिए, ऐसे टाइप की कोई हम लोग अथॉरिटी ही नहीं बनाएंगे. हु वाज दिस डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज? हु यूज्ड टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द दिल्ली गवर्नमेंट. सो हमें ऐसे कोई कोऑर्डिनेटर चाहिए नहीं, तो निकाल दिया. देन स्पेशल ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड, जो कि सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की. वो दिल्ली गवर्नमेंट को बीच में से हटा दिया. So that is what is this particular amendment all about. Then is e-governance system for the citizens, that whenever, wherever they have a problem, the citizens, they can file a complaint on this digital platform, and they can get redressal for whatever wrong is happening. And the last thing is condition of service for the sweepers. So the bill has particularly, this has bill nahi hai, act has omitted this provision. It was saying that a sweeper employed for doing house scavenging of a building would be required to give reasonable cause of 14-day notice before discontinuing his service. फिर ऐसे टाइप का एक स्वीपर को बिल्कुल भी ये नोटिस पीरियड देने की जरूरत नहीं है. इस चीज को हमने हटा दिया. अब बच्चे, द लास्ट वन इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जिसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आर रिलेटेड ऑफ कोर्स टू चाइल्ड मैरिज, बट ऑल्सो लाइक देयर आर सर्टेन स्टैट्स दैट वी नीड टू नो. बिल को कन्वर्ट नहीं किया है एक्ट में. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है. बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोगों ने ये जो शादी करने की एज है एक लेडी के लिए, उसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है? सो अब पहले कितना होता था, मतलब पहले क्या, आज की डेट पे 18 है, बट दिस पर्टिकुलर बिल सेज दैट इट शुड बी इंक्रीज्ड एंड इट शुड बी मेड 21. So you see, this particular act, the 2006 act, says that the child marriage is a voidable marriage, voidable in the sense that upon attaining the age of majority, you will get 2 years to either make it a valid marriage or to make it completely void
meaning thereby to annul such a marriage. तो पहले क्योंकि yes, correct, Tanvi. It has just been, it is a bill right now, है ना? तो अब क्या है कि 21 years of age, मतलब अगर 18 साल की उम्र में हमने बोल दिया कि आपकी शादी हो सकती है, तो आप 20 साल की उम्र तक इसको अनल कर सकते हो. जो बिल है वो उसको 21 साल कर रही है, तो दैट मीन्स 23 साल की उम्र तक आप उसको अनल कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, NHFS, ये आपने शायद सुना ही होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 5th survey हुआ है. It says 23% of the women between the age of 20 and 24 were married before the age of 18. And this figure has significantly reduced over the years, right? And so what we are trying to say over here is, what these facts are saying is, merely changing the age of marriage is not going to stop child marriage. A lot of other things need to happen for you to be able to stop child marriage in India. But changing the age of majority is not going to just change the mindset of people, right? So in India, the practice of child marriage was first legally prohibited in 1929, whereas in the 1929 Act, the marriage of girls below the age of 14 years and boys below the age of 18 years was prohibited. Fine. So the act was amended in 1978, for which minimum age for females became 18 and 21 years for men. The Prohibition of Child Marriage Act has replaced the 1929 Act with the same minimum age limits. अब 2020 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टास्क फोर्स सेटअप हुआ था. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. द चेयरपर्सन वाज जया जेटली. To examine the correlation between the age of marriage and motherhood. So what we are trying to avoid is adolescent birth rate. What we are trying to stop is maternal mortality rate, or possibly reduce the maternal mortality rate. क्योंकि मदर की हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है एंड बच्चे के हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को भी हमने खत्म करना है. ठीक है. फिर इसमें क्या है कि दे हैड टू लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू मैरिज. सो पहली बात, कीपिंग इन माइंड द हेल्थ, देन की पैरामीटर्स एंड न्यूट्रिशन एंड अमंगस्ट अदर थिंग्स. So they were the ones who said that, increase the age for females to 21 years of age, जिसको मान के फिर ये बिल बनाया गया था. पर इनका ये टास्क फोर्स का जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है. Only the fact that they said this. Prohibiting the marriage between the age of 18 and 21. There are a lot of cases over here for your legal GK. Please keep these in mind. These are important. So अब पहली बात तो ये है that in 2018, our Supreme Court says that right to marry is a part of the right to life under Article 21. Protection of life and personal liberty except according to the procedure established by law. I want to, this is my fundamental right, whether or not I want to get married. It is a part of my right to life. Khatam baat. Theek? So this is Shafeen Jahan versus Ashokan and others. Right? And you can take away this right. However, that procedure needs to be fair, just, reasonable. There has to be a nexus to the objective, that why are you stopping this person to get married at a particular age? And in this particular case, there is no reasonable nexus, because how it's just changing the age limit is not going to stop child marriage, firstly. Secondly, the fact that you turn major at the age of 18 and you can get into a contract, you can vote in this country, but you can't get married. I'll make it even better. The next is Shakti Vahini versus Union of India. Again, a case of 2018, wherein the court said that when two adults, people who are 18 and above, consensually choose each other as a life partner, it is a manifestation of their choice, which is recognized under Article 19, Article 21. Two adults means people above the age of 18. Yes? So, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया 18 साल के ऊपर you can go and you can, it is a manifestation of your choice if you want to go and get married to somebody. But however, if this bill gets converted into an act, then that will be a little weird. Then it gets even better. Then as the bill restricts the right to marry before the age of 21 years.
The question is whether this restriction for those between 18 to 21, is it a reasonable restriction? Now, for anything to be a reasonable restriction, this is Justice Puttaswamy versus Union of India, which also spoke about the fact that right to privacy is an integral part of Article 21. अब कौन से रिस्ट्रिक्शन को आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानेंगे? तो 3 चीजें होनी चाहिए. पहली बात तो एक तुम्हारा कोई पब्लिक पर्पस होना चाहिए ये रिस्ट्रिक्शन करने के लिए. Second is the restriction should have a nexus with such purpose. Well, the class will get over in some time. In case you have something else to do, you can go right now and you can see it later, beta. Anyway, so the restriction should have a direct nexus with such a purpose. एक direct connection होना चाहिए. And the last thing is there should be absence of a less intrusive way to achieve this purpose. मतलब किसी और तरीके से ये वाले purpose को हम solve नहीं कर पा रहे हैं, वो ये least intrusive method है to solve this particular purpose. So ये 3 चीजों को नजर में रखते हुए we'll have to do this. ठीक है? Just give me a second. हाँ. Now in 2018, under the Navteej Singh Johar versus Union of India का केस, इसमें क्या बोल दिया कि so इसमें क्या बोल दिया कि under Navteej Singh Johar versus Union of India का केस, they say that consensual sex between consenting adults is a fundamental right under Article 14, 15, 19 and 21. Now, if this bill is to be passed, then consensual sex is considered to be correct. However, you cannot get married at that age, then that is another problem, right? Now, annulling a child marriage, they say between the age of 18 to 21 years of age, you are giving that person a chance to annul the marriage till 23. जहाँ पे 18 years of age पे you can get into a valid contract, वहाँ पे till 23 you are able to annul that particular contract. That makes no sense, because the only reason why you will be able to make that happen is if those people who are getting into a contract are of unsound mind. So these are consenting adults who are above the age of 18, of sound mind. They are fulfilling all the various criterions of free consent and a valid contract under the Indian Contract Act of 1872 is why this should not happen, is what is being alleged. Now, implementation challenges of 2006 Act. Now, we are just going to go on to the things that are required for us and then we will end it, okay? So, अब जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा था, there was a question pertaining to the female labor force participation rate. Do we remember that? Sample paper का जो question था. So because वो Oxfam report वाला question था हमारे पास कि कितने female labor force participation rate है, what is the percentage, is why I have kept these percentages over here. Is that okay, everyone? Are we understanding? We are just going to end it, okay? So National Family Health Survey is super important. Fine. Wherein they have said that the prevalence of underage marriages remain very, very high, with 23% of the women between 20 to 24 years of age who are married before the age of 18. So only thing that you have to keep in mind is that ये National Family Health Survey 2019 to 21 ने ये कहा है कि 20 to 24 years of age, women between 20 to 24 years of age married before the age of 18. So that is one that you have to keep in mind. Now, the next one is the health indicators. One is your maternal mortality rate. One is your infant mortality rate. Now, with respect to maternal mortality rate, this report was made by the Registrar General of India in 2022, wherein he has said that we have decreased the maternal mortality rate to 103. So 113 मत learn करना, 103 जरूर आपको पता होना चाहिए. And please remember the states जहाँ पे ये maternal mortality rate has been reduced. So one is Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Odisha, Assam. Either the maternal mortality rate, according to the Registrar General of India, is very high.
right? It is high in Punjab, Uttarakhand, and West Bengal, and it is low in Haryana and Karnataka. In fact, it has worsened in West Bengal, Haryana, Uttarakhand, and Chhattisgarh. So 7 states may it is extremely high, which means, which is of course very bad, right? And then high in Punjab, Uttarakhand, and West Bengal, and it is low in Haryana and Karnataka. Now I'm saying that the maternal mortality rate is low in Haryana, but on the other end, I'm saying that the ratio has worsened in Haryana. So that can happen, right? तो अगर हम लोग maternal deaths की बात कर रहे हैं तो it is low as compared to the rest of the states in country, लेकिन previous year से अभी की अगर हम बात करें तो it has worsened in Haryana. Now the very last thing, last 2 things, and then we will end it, okay? So the next is your infant mortality rate, जहाँ पे 2019 के बारे में अगर हम बात करें तो we have reduced the infant mortality rate to 30. We also need to know the definition. So the number of deaths of a child under the age of 1 year per 1,000 live births, that is what is the meaning of infant mortality rate. तो maternal mortality rate भी कम हुआ mostly in except for those 7 states. Infant mortality rate थोड़ा सा कम हुआ, which is a good thing. और अभी तक हमने एज चेंज की नहीं है. So which is what the government is trying to say, the opposition actually, that you don't need to do this. Labor force participation rate. Now according to this is your question from your sample paper, the India Discrimination Report of 2022 by Oxfam. What did they say? That for the previous year, the female labor participation rate was 25%. And of course, like the annual periodic labor force survey of 2020 to 21 has also said the same thing. हमने बस 0.1 थोड़ा सा बढ़ा के बोल दिया 25.1%. ये दिमाग में रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आया है सैम्पल पेपर में. ठीक है. बाकी ILO ने क्या बोला कि ये लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्यों है? Because of the fact that females are not adequately educated. Fertility rate, age of marriage, economic effects, social norms, and urbanization, right? Baki, this is the last thing that we are going to do, and then we will call it a day. Okay? So committee and convention, the recommended age and the rationale. So according to the UNICEF, the recommended age for marriage should be 18 for both male and female. The United Nations Convention on the Rights of Children 2016, it should again be 18 for both female and male. Our own parliamentary standing committee has said 21 for male and 18 for female. And the Law Commission also says 18 for both male as well as female. Now, I'll just tell you a little bit, ये election वाला next time कर लेंगे. आज थोड़ा ज़्यादा हो गया. अब मेरी बात सुन लो, तुम लोगों ने करना क्या क्या है. ये पता होना चाहिए कौन सी बिल एक्ट में कन्वर्ट होगी, कौन सी बिल आज के डेट पे बिल ही है. अगर बिल है तो इसकी पेरेंट एक्ट कौन सी है, अगर एक्ट भी है तो इससे पहले वाला एक्ट कौन सा था, कौन से ईयर का था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन कौन है, organization is a statutory body, is it an executive body or a constitutional body? Is that clear, everyone? So we will meet the next time and we will do the electricity wala and the rest of it also. Fine? Done? ठीक है, thank you very much. That is all from my side.